Guruji Maharaj for giving this opportunity to read and to listen to Shivpuran. Here is the synopsis from last week. We read chapter 41, 42 and 43 of Rudra Samhita part 3, in which we read Shiva and Vishnu sent Narada to Himavat's abode, where he saw the amusing altar created by Vishwakarma. He was bewildered to see the lifelike gods there and asked Himavat if everyone had arrived. Himavat told Narada that the illusion was created by Vishwakarma and requested him to have his food and then accompany Menang and other mountains to Shiva's presence. Narada and other mountains lead the procession to the abode of Himavat, and delighted Shiva reached the outskirts of city accompanied by Vishnu and others. Meeting each other, the gods and mountains considered each other best. Himavat bowed down in front of Lord Shiva, who was seated on his bull, bedecked with ornaments. He stationed the gods on a beautiful summit specially arranged for them. He went to the altar where the rites were to take place and gave charitable gifts. The Lord sent Narada to Meena as Meena desired to see real form of Shiva. Lord Shiva realized Meena's false pride and made a plan with Vishnu and Brahma. He asked them to go to the threshold of the mountain, accompanied by other gods, and Shiva would follow them. Vishnu then called all the gods and told them the suggestion, and all gods walked in accordance with it. At the head of the procession was Gandharvas. Meena asked Narada if it was Shiva, and Narada told her that they were attendants of Shiva. One by one, many gods came in, one more powerful than the previous, and each time Meena thought that it was Shiva. She was charmed by the splendor of these gods and thought, if the attendants of Shiva are that powerful, then Shiva's splendor must be unimaginable, and beamed with pleasure as she realized the good fortune of her daughter Parvati. Just then, Shiva's army came there, consisting of Bhutas, Pretas and Ganas. On seeing them, Meena was terribly frightened. Shiva was also there in the midst. Shiva was devoid of all attributes. Seated on a bull, he had 5 faces, 3 eyes, matted hair, and ashes smeared all over his body. He had 10 hands and a skull in one of the hands. He had ugly features. On seeing Shiva, Meena fell unconscious on the floor. She regained consciousness after a while, but was grief-stricken. So this is still where we read last time. Today we will be reading chapter 44. That's Meena regains consciousness. Our English reader is Shalini Aunty and Hindi reader is Rachna Aunty. Jai Guruji, Shivpuran Maharaj. If anybody wants to read Shivpuran, you can contact Mansi Aunty, Seema Aunty, or myself. Thank you. Jai Guruji. Jai Guruji. So we'll be reading chapter 44. Brahma said, on regaining consciousness, the chaste beloved of mountain lamented with great agitation and began to rebuke everyone. In faltering words, she frequently censured her sons at first, and then scolded her daughter. Meena said, O sage, formerly it was mentioned to be that Parvati would marry Shiva. Afterwards, you assign some activity or worship to Himavat. Its fruit is visible now, to be sure, but it is adverse and meaningless. O sage, O wicked-minded one, I, the innocent woman, have been cheated by you by all means. The fruit of penance which she performed, and which is very difficult even for sages to perform, has been this painful to every onlooker. What shall I do? Where shall I go? Who will dispel my sorrow? My family is wrecked. My life is doomed. Where are those so-called celestial sages? I shall pluck out their beards. Where is that mischievous woman who came here by herself in the guise of the wife of one of them? By whose guilt have I been ruined now? Saying this, she turned to her daughter and began to say harsh words. O wretched daughter, what is it that you have done? This is extremely painful to me. You have given gold and brought a glass of peace. O wicked girl, you have cast away sandal paste and smeared yourself with mud. You have driven away the swan and have held
a crow in your hands. Setting aside the sacred river water, you have drunk the well water. Losing the sun, you have clung onto the glowworm in all earnestness. Throwing away cooked rice, you have eaten the husk. Spilling away the clarified butter, you have eagerly swallowed the castor oil. Setting the lion aside, a jackal has been served by you. Without listening to the Lord, the Supreme Brahman, you have heard base ballads. O daughter, casting off the holy sacrificial ashes at home, you have taken the inauspicious ashes from the funeral pyre. Abandoning the great lords, Vishnu, and others, you have performed penance for Shiva. Your intellect has really gone astray. Few on you, few on your intellect, few on your beauty and conduct, few on your advisor, few on your maids too, few on us who brought you thus to the world, O daughter. O Narada, few on your intelligence and few on those 7 sages who gave us wrong advice. Few on the whole family, few on the efficiency in the performing of the rites, few on everything done by you. You have inflamed this household, almost it has been a death blow to me. Let not the king of mountain come near me, let not the 7 sages show their faces to me. Has anything been achieved? Our whole race is wrecked by, all conspiring together. How is it that I have not remained a barren woman? How is it that the miscarriage did not take place when I conceived? How is it that I did not die? How is it that the girl did not die? Why is she not devoured by the demons and others from the sky? I shall cut off your head. What shall I do with the bodies? Abandoning you? Where shall I go? Alas, my whole life is doomed. Brahma said, after saying this to Meena, fell unconscious on the ground. Agitated by grief and anger, she did not go near her husband. There was a great hue and cry at that time. O great sage, the gods came near her. O celestial sage, I to myself on seeing me, O excellent sage, you spoke to her. Narada said, the real handsome form of Shiva is not known by you. This form is assumed by Shiva in a sportive mood. It is not the real form. Hence, O chaste lady, cast off anger, be calm, leave off your obduracy, do what is proper to be done, give Parvati to Shiva. Brahma said, on hearing your words, Meena spoke to you, O wicked one, get up and go away, you are base. When she said thus, Indra and all other gods and the guardians of the quarters came and spoke. The gods said, O Meena, O daughter of the Pitters, listen to our words joyously. This Shiva is the Supreme, Lord himself, the bestower of the greatest happiness. He is favorably disposed to good devotees. On seeing your daughter's severe penance, he had appeared before her and granted her the boon. Brahma said, Meena cried aloud frequently and spoke to the gods. My daughter will not be given to Shiva of fierce speeches. Why, you have all conspired together to render her beauty futile. O excellent sages, when she uttered thus, the 7 sages, Vashishta and others, came there and spoke. The 7 sages said, O daughter of the Pitters, O beloved of the mountain, we have come here to achieve a purpose. In this important affair, how can we entertain opposite views? The very vision of Shiva is the greatest gain. He has come to your palace as a suppliant for your gift, Brahma said. Though advised by them, Meena did not accept their proposal. Weak in knowledge, she spoke to the sages in anger. Meena said, I would rather slay her with weapons than give her to Shiva. All of you, go away. You shall never come near me. Brahma said, O sage, on saying thus, she stopped, she cried aloud in great excitement. A great hue cry ensued due to her intercession. The Himakala himself came there, extremely agitated. In order to convince her, he spoke lovingly, pointing to her the reality of the situation.
Himakala said, O beloved Meena, listen to my words. How is it that you have come dispirited? How many important persons have come to your abode, and you are insulting them? You do not know Shiva. Shiva has many names and many forms. Seeing a peculiar, distorted form, you have become excited. He has been realized by me. He is a protector of everyone. He is worthy of worship, of the most adorable. He can bless and countermand. Do not obstinate. O faultless beloved, do not get grief-stricken. Get up, hasten. O virtuous one, carry on your duties. Let me remind you of your former incident when Shiva came to our palace in a hideous form and exhibited his forms. But on seeing his greatness, we both consented to give our daughter in marriage to him. O beloved, keep that promise. Brahma said. After saying thus, the Lord of Mountains stopped. O sage, on hearing it, Meena, the mother of Shiva, spoke to Himavat. Meena said, O Lord, let my words be heard. You can carry out what I say. Take your daughter Parvati, tie her up, and cast her down the deep abysmal chasm, or drown her in the deep sea and be happy. I'm not going to give her to Shiva. If you give your daughter to him, who is of hideous features, O Lord, I shall certainly leave off this mortal frame. Brahma said, when these words were spoken by Meena in her obduracy, Parvati voluntarily spoke in a sweet voice. Parvati said, O mother, your noble intellect has become perverted. Why do you forsake virtue? You who ought to depend on virtue alone. This Shiva has no one else greater than him. He is Shiva, the source of everything. He is beautiful, pleasing, and utilized in all the Vedas. Shiva is the benefactor. He is the Lord of gods. He is self-ruler, O mother. He is of many forms and names. He is served by Vishnu, Brahma, and others. He is the support of everything. He is a creator and annihilator. He is free from aberrations. He is the Lord of three deities. He is indestructible and eternal. It is for him that the gods, as attendants, have come here. They stand in festive mood at your threshold. What more pleasure do you need? Hence get up, endeavor to make your life fruitful. Give me to Shiva. Make my effort meaningful. O mother, give me to Lord Shiva. O mother, agree my humble entreaty, I request you. If you do not give me to Shiva, I am not going to woo anyone else. How can Jackal, the cunning cheat, seize the share of the lion? O mother, Shiva has been wooed. Yes, wooed by me, mentally, verbally, physically. You can do what you please, Brahma said. On hearing these words of Parvati, Meena, the beloved of the Lord Mountains, lamented much. She became angry. She caught hold of Parvati and thrashed her with fists, elbows, gnashing her teeth. She was greatly agitated and furious. O dear one, O sage, you and the other sages who were there separated her from the mother and took her far off. Meena then rebuked them again and again. She hurled harsh, repulsive words at all of them. Meena said, see what I will do to Parvati, the evil inclination. I will give her deadly poison, or I will push her down in a deep well, or I will cut her into many pieces with weapons and arrows, or I will drown my daughter Parvati in deep sea, or I will certainly cast off my body, but I will never give my daughter to Shiva in hideous form. What an awful bridegroom has been secured by this wicked girl. The mountain and I, nay the whole family, has made a laughing stock. He has neither a mother nor a father. He has no brother, no kinsman. He is not even a fellow clansman. He has no beauty, no skill, not even a house of his own. He has no good dress, no ornaments, no assistance. His vehicle is not good. He is neither rich nor even in the prime youth. He has no tidiness about him. He is not learned. What a repulsive body he has. What has he on seeing which I may be tempted to give my good daughter to him? Brahma said, O sage, she lamented thus in many similar manners. She cried in access of her grief.
Then I came there, quickly narrated to her the principles of Shiva, which ought to have dispelled her perverted knowledge. O Meena, you shall listen lovingly to my auspicious words, whereby your evil inclination shall cease. Shiva is the creator, sustainer, and annihilator of the universe. You do not know his real form. Wherefore, do you then seek sorrow? The Lord has several forms and names. He indulges in many kinds of divine sports. He is the Lord of all and independent. He is a master of delusion and free from doubtful alternatives. Realizing this, O Meena, give your daughter to Shiva. Abandon your misplaced stubbornness. Your evil inclination is destructive of all affairs. Thus addressed by me, Meena continued to cry again and again. Slowly, O sage, she eschewed all shame and spoke to me. Meena said, O Brahma, why do you render her excellent beauty futile? Why don't you kill her yourself? You shall not tell me again that she should be given to Shiva. I will not give my daughter, dearer than my life, to Shiva. Brahma said, O great sage. When she expressed thus, Sanaka and the Siddhas came there and spoke lovingly. Siddha said, this Shiva is the supreme being, the bestower supreme happiness out of his sympathy. He has granted his vision to your daughter. Brahma said. Then Meena said to them, after sobbing frequently, my riches are not to be given to Shiva of hideous form. Why are you Siddhas collectively attempting to make her exquisite beauty futile? When this was mentioned by her, I became stunned. All the gods, Siddhas, sages, and human beings were bewildered. In the meantime, on hearing of her persistent obduracy, Vishnu, a favorite of Shiva, came there and spoke as follows. Vishnu said, you are the beloved mental daughter of the Pitras. You are endowed with all good qualities. You are the wife of Himavat himself. Yours is the excellent race of Brahma. Your well wishes in the world are also like him, Brahma. You are really blessed. What more can I say? You are reputed to be a patron virtue. Why do you then eschew virtue? May this be pondered over by you yourself. Can anything against you be mentioned by the gods, sages, and Brahmas, or by myself? You do not know Shiva. He is both possessed and devoid of attributes. He is hideous as well as homely. He is worthy of worship by all. He is the ultimate goal of the good. The primordial nature is created by him alone. Near her, the excellent primordial being has also been created by him. Brahma and I are created thereafter. Then, with the three attributes, Shiva himself incarnated in order to be beneficial to the worlds. The Vedas originated from him. The gods sprang from him. Whatever mobile and immobile there is in the universe sprang up from him. Who has described his form? By whom can know? Even Brahma and I were not able to gauge him. Whatever is seen in the universe from Brahma down to the blade of grass is identical with Shiva. Know it. There need not be any hesitation in this matter. He alone, in the course of his divine sport, has incarnated himself in divine form. It was the fascination of Parvati's penance that he has come to your threshold. Hence, O wife of Himavat, eschew your sorrow, worship Shiva. You will have great pleasure. All pain will be quelled. Brahma said, O sage, when instructed by Vishnu, Menka's mind was somewhat softened. But she did not give up her obduracy. She did not consent to the proposal of giving her daughter to Shiva. Meena was deluded by Shiva's magic. On hearing the pleasing words of Vishnu, the beloved of the mountain, the mother of Parvati became slightly enlightened and spoke to Vishnu. If he assumes a lovely form and body, my daughter may be given to him, and not otherwise. Even if you attempt it 1,000 times, this is my firm decision. After saying thus, Meena, of steady resolve, kept quiet. She was induced by Shiva's will, whose magical power deludes all. Jai Guruji.
शुक्राना गुरुजी फॉर दिस सेवा। मीना का विलाप शिव के साथ कन्या का विवाह न करने का हट देवताओं तथा श्री विष्णु का उन्हें समझाना तथा उनका सुंदर रूप धारण करने पर ही शिव को कन्या देने का विचार प्रकट करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब हिमाचल प्रिया सती मीना को चेत हुआ तब वे अत्यंत शुद्ध होकर विलाप एवं तिरस्कार करने लगी। पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों की निंदा की, इसके बाद वे तुम्हें और अपनी पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगी। मीना बोली, मुने, पहले तो तुमने ये कहा कि शिवा शिव का वर्ण करेंगी, पीछे मेरे पति हिमान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाया, परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा गया? विपरीत एवं अनर्थकारी दुर्बुद्धि देवर्षि, तुमने मुझ अधम नारी को सब तरह से ठग दिया। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है। उसकी उस तपस्या का यह फल मिला जो देखने वालों को भी दुख में मिलता है। हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवन का भी नाश हो गया। कहाँ गए वे दिव्य ऋषि? पाऊं तो मैं उन्हें दाढ़ी मूछ नोच लूं। वशिष्ठ की वह तपस्वी पत्नी भी बड़ी धूर्ता है, वह स्वयं इस विवाह के लिए अगुआ बनकर आई थी। न जाने किन किन के अपराध से यह समय मेरा सब कुछ लुट गया। ऐसा कहकर मीना अपनी पुत्री शिवा की ओर देखकर उन्हें कटु वचन सुनाने लगी। अरे दुष्ट लड़की, तूने ये कौन सा कर्म किया जो मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ? तुझ दुष्टा ने स्वयं ही सोना देकर कांच खरीदा है, चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ का ढेर खोद दिया। हाय हाय, हंस को उड़ाकर तूने पिंजरे में कौवा पाल लिया, गंगा जल को दूर फेंककर कुएं का जल पिया, प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर यत्न पूर्वक जुगनू को पकड़ा, चावल छोड़कर भूसी खा ली, घी फेंककर मोम के तेल का आदर पूर्वक भोग लगाया, सिंह का आश्रय छोड़कर सियार का सेवन किया, ब्रह्म विद्या छोड़कर कुत्सित गाथा का श्रवण किया। बेटी, तूने घर में रखी हुई यश की मंगलमयी विभूति को दूर हटाकर चिता की अमंगलमयी राख अपने पल्ले बांध दी, क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवताओं और विष्णु आदि परमेश्वरों को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए ऐसा तय किया। तुझको, तेरी बुद्धि को, तेरे रूप को और तेरे चरित्र को भी बारंबार धिक्कार है। तुझे तपस्या का उपदेश देने वाले नारद को तथा तेरी सहायता करने वाली तेरी सखियों को भी धिक्कार है। बेटी, हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है जिन्होंने तुझे जन्म दिया। नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है, सुबुद्धि देने वाले उन सब ऋषियों को भी धिक्कार है, तुम्हारे कुल को धिक्कार है, तुम्हारी क्रिया दक्षता को भी धिक्कार है, तथा तुमने जो कुछ किया उस सब को धिक्कार है। तुमने तो मेरा घर ही जला दिया, यह तो मेरा मरण ही है। ये पर्वतों के राजा आज मेरे निकट न आए, सप्तर्षि लोग स्वयं मुझे अपना मुंह न दिखाएं। इन सब ने मिलकर क्या साधा, मेरे कुल का नाश करा दिया। हाय, मैं बांझ क्यों नहीं हो गई, मेरा गर्भ क्यों नहीं जल गया, मैं अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई, अथवा राक्षस आदि ने भी आकाश में ले जाकर इसे क्यों नहीं खा डाला। पार्वती, आज मैं तेरा सिर काट डालूंगी, परंतु ये शरीर के टुकड़े लेकर क्या करूंगी। हाय हाय, तुझे छोड़कर कहाँ चली जाऊं, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ये कहकर मीना मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। शोक रोष आदि से व्याकुल होने के कारण वे पति के समीप नहीं गई। देवर्षि, उस समय सब देवता क्रमशः उनके निकट गए। सबसे पहले मैं पहुंचा। मुनि श्रेष्ठ, मुझे देखकर तुम स्वयं मीना से बोले। नारद ने कहा, पतिव्रते, तुम्हें पता नहीं है, वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा सुंदर है। उन्होंने लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया है, यह उनका यथार्थ रूप नहीं है। इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ, हर्ष छोड़कर विवाह का कार्य करो और अपनी शिवा का हाथ शिव के हाथों में दे दो। तुम्हारी ये बात सुनकर मीना तुमसे बोली, उठो, यहाँ से दूर चले जाओ, तुम दुष्टों और अधर्मों के शिरोमणि हो। मीना के ऐसा कहने पर मेरे साथ इंद्र आदि सब देवता एवं दिक्पाल क्रमशः आकर यूं बोले, पितरों की कन्या मैंने
तुम हमारे वचनों को प्रसन्नतापूर्वक सुनो। ये शिव निश्चय ही सबसे उत्कृष्ट देवता हैं और सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। आपकी पुत्री के अत्यंत दुस्सह तप को देखकर इन भक्त वत्सल प्रभु ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन और श्रेष्ठ वर दिया था। यह सुनकर मीना ने देवताओं से बारंबार अत्यंत विलाप करके कहा, शिव का रूप बड़ा भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। आप सब देवता प्रपंच करके क्यों मेरी इस कन्या के उत्कृष्ट रूप को व्यर्थ करने के लिए उद्वत हैं? मुनीश्वर, उनके ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सप्तर्षियों ने वहां आकर यह बात कही, पितरों की कन्या तथा गिरिराज की रानी मैंने, हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो कार्य सर्वथा उचित और उपयोगी है उसे तुम्हारे हट के कारण हम विपरीत कैसे मान ले? भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाभ है। वे दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं। उनके ऐसा कहने पर भी ज्ञान दुर्बला मैना ने उनकी बात मिथ्या कर दी और रुष्ट होकर उनसे कहा, मैं शस्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, परंतु उस शंकर के हाथ में नहीं दूंगी। तुम सब लोग दूर हट जाओ, किसी को मेरे पास नहीं आना चाहिए। ऐसा कह अत्यंत विह्वल हो विलाप करके मैना चुप हो गई। मुने वहां उनके इस वर्ताव से हाहाकार मच गया। तब हिमालय अत्यंत व्याकुल वहां आए और मीना को समझाने के लिए प्रेम पूर्वक तर्क दर्शाते हुए बोले। हिमालय ने कहा, प्रिय मैंने, मेरी बात सुनो, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो गई? देखो तो कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं, तुम इनकी निंदा क्यों करती हो? भगवान शंकर को तुम भी जानती हो, किंतु नाना नाम रूप वाले शंभु के विकट रूप को देखकर घबरा गई हो। मैं शंकर जी को भली भांति जानता हूँ, वे ही सबके प्रतिपालक हैं, पूजनियों के भी पूजनीय हैं तथा अनुग्रह एवं निग्रह करने वाले हैं। निष्पाप प्राण प्रिय, हट न करो, मानसिक दुख छोड़ो, शीघ्र उठो और सब कार्य करो। पहली बार विकट रूपधारी शंभु ने मेरे द्वार पर आकर जो नाना प्रकार की लीलाएं की थी, मैं उनका आज तुम्हें स्मरण दिला रहा हूँ। उनके उस परम महाबल को देख और समझकर उस समय मैंने और तुमने उन्हें कन्या देना स्वीकार किया था। प्रिय, अपने उस बात को प्रमाण मानकर सार्थक करो। इस बात को सुनकर शिवा की माता मीना हिमालय से बोली, नाथ मेरी बात सुनिए और सुनकर आपको वैसा ही करना चाहिए। आप अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांधकर इसे बेखटके पर्वत से नीचे गिरा लीजिए, परंतु मैं इसे हर के हाथ में नहीं दूंगी। अथवा नाथ अपनी इस बेटी से जाकर निर्दयता पूर्वक समुद्र में डुबो दीजिए। गिरिराज, ऐसा करके आप पूर्ण सुखी हो जाएंगे। स्वामी, यदि विकट रूपधारी रुद्र को आप पुत्री दे देंगे तो मैं निश्चय ही अपना शरीर त्याग दूंगी। मीना ने जब हठपूर्वक ऐसी बात कही, तब पार्वती स्वयं आकर यह रमणीय वचन बोली, माँ, तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी शुभकारक है, इस समय विपरीत कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाली होकर भी तुम धर्म को कैसे छोड़ रही हो? ये रुद्रदेव सबकी उत्पत्ति के कारणभूत साक्षात ईश्वर हैं, इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। समस्त श्रुतियों में यह वर्णन है कि भगवान शंभु सुंदर रूप वाले तथा सुखद है, कल्याणकारी महेश्वर, समस्त देवताओं के स्वामी तथा स्वयं प्रकाश है। इनके नाम और रूप अनेक हैं। माता जी, श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि भी इनकी सेवा करते हैं। ये सबसे अधिष्ठान है, कर्ता, हर्ता और स्वामी हैं। विकारों की इन तक पहुंच नहीं है। ये तीनों देवताओं के स्वामी, अविनाशी एवं सनातन हैं। इनके लिए ही ये सब देवता किंकर होकर तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं और उत्सव मना रहे हैं। इससे बढ़कर सुख की बात और क्या हो सकती है? अतः यत्न पूर्वक उठो और जीवन सफल करो, मुझे शिव के हाथ में सौंप दो और अपने गृहस्थाश्रम को सार्थक करो। माँ, मुझे परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो। मैं स्वयं तुमसे ये बात कहती हूँ, तुम मेरी इतनी सी विनती मान लो। यदि तुम इनके हाथ में मुझे नहीं दोगी तो मैं दूसरे किसी वर का वरण नहीं करूँगी, क्योंकि जो सिंह का भाग है उसे दूसरों को ठगने वाला सियार कैसे पा सकता है? माँ, मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा स्वयं हर का वरण किया है, हर का ही वरण किया है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो।
ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती की ये बात सुनकर शैलेश्वर प्रिया मीना बहुत ही उत्तेजित हो गई और पार्वती को डांटते हुए दुर्वचन कहकर रोने और विलाप करने लगी। तदनंतर स्वयं मैंने तथा संकादिक सिद्धों ने भी मीना को बहुत समझाया, परंतु वे किसी की बात ना मानकर सबको डांटती रहीं। इसी बीच में उनके सुदृढ़ एवं महान नट की बात सुनकर शिवप्रिय भगवान विष्णु भी तुरंत वहां पहुंचे और इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवी, तुम पितरों की मानसी पुत्री एवं उन्हें बहुत ही प्यारी हो, साथ ही गिरिराज हिमालय की गुणवती पत्नी हो। इस प्रकार तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है। संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे ही हैं। तुम धन्य हो। मैं तुमसे क्या कहूँ, तुमको धर्म की आधारभूता हो, फिर धर्म का त्याग कैसे करती हो? तुम ही अच्छी तरह सोचो तो सही। संपूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी और मैं सभी लोग विपरीत बात ही क्यों कहेंगे? तुम शिव को नहीं जानती। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, कुरूप भी हैं और सरूप भी हैं, सबके सेव्य तथा सत्पुरुषों के आश्रय हैं। उन्हीं ने मूल प्रकृति रूपा देवी ईश्वरी का निर्माण किया और उसके बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बिठाया। उन्हीं दोनों से सगुण स्वरूप में मेरी तथा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। फिर लोगों का हित करने के लिए वे स्वयं ही रुद्र रूप से प्रकट हुए। तदनंतर वे देवता तथा स्थावर जगम रूप से जो कुछ दिखाई देता है वह सारा जगत भी भगवान शंकर से ही उत्पन्न हुआ। उनके रूप का ठीक ठीक वर्णन अब तक कौन कर सका है अथवा कौन उनके रूप को जानता है? मैंने और ब्रह्मा जी ने जिनका अंत नहीं पाया, उनका पार दूसरा कौन पा सकता है? ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिव का ही रूप है, ऐसा जानो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वे ही अपनी लीला से ऐसे रूप में अवतीर्ण हुए हैं और शिवा के तप के प्रभाव से तुम्हारे द्वार पर आए हैं। अतः हिमाचल की पत्नी, तुम दुख छोड़ो और शिव का भजन करो। इससे तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा और तुम्हारा सारा क्लेश मिट जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, श्री विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर मीना का मन कुछ कोमल हुआ, परंतु शिव को कन्या ना देने का हट उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा। शिव की माया से मोहित होने के कारण ही उन्होंने ऐसा दुराग्रह किया। इस समय मीना ने शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया। कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्री हरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर ले तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि उपाय करने पर भी नहीं दूंगी। यह बात मैं सच्चाई और दृढ़ता के साथ कह रही हूँ। ऐसा कहकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली मीना शिव की इच्छा से प्रेरित हो चुप हो गई। धन्य है शिव की माया जो सबको मुंह में डाल देती है। इसके साथ ही अध्याय 44 समाप्त। जय गुरु जी।